Uh, Today I will discontinue my discussion on the review of calculus in general because last time some of you talked about your concern uh, for the use of epsilon and delta, uh, and during that part of the class I described the terms infinity and infinitesimal. Uh, Both are not finite. Infinity is something so large that you think of largest possible number, and it is still larger than that. Whereas infinitesimal is something so small that you think about the smallest, and it is smaller than that. So when we use the term epsilon delta and say that they are small numbers, uh, so they are not infinitesimally small. They are just small. Mm, and not and they are finite. So a bit of the issues of epsilon and delta that we first use in the definition of limit of a function, that given any epsilon positive small number, uh, how to find a delta small number such that these conditions that are stated in the definition of limit fx minus L is less than epsilon whenever x minus a is less than delta but greater than 0, and x is not equal to 1. So I demonstrate with one example here that uh, give you some idea. Uh, Let us consider a linear function. Fx is 3x minus 5. Uh, and we know that limit as x approaches 2 of this function has to be 1. So in terms of the notations used in the definition, now L is 1, fx is 3x minus 5, and the point where the limit is sought is a equal to. So according to this statement, fx minus L has to be less than epsilon, means fx की जगह पे 3x minus 5 इस्तेमाल किया और L की जगह पे 1 इस्तेमाल किया. So this becomes 3x minus 6 less than epsilon, which can be simplified after taking 3 common. Positive number, uh, 3 into x minus 2 is less than epsilon, which algebraically, since 3 is a positive number, we can divide both sides and we get x minus 2 less than epsilon by 3. Now requirement is by the definition that x minus a is less than delta. So what we have x in place of x minus a, we have in place of x minus a, we have in place of x minus a, x minus 2, because a is equal to 2. So now we require x minus 2 less than delta, whereas in our working for this problem, we have reached the result x minus 2 is less than epsilon by 3. So comparing these two, we conclude that uh, this is delta. So delta is obtained to be epsilon by 3. So that means कि जब भी function values जो हैं वो limit से epsilon के फासले पर होंगी at most, तो x values जो हैं वो 2 से at most epsilon by 3 के फासले पर होंगी, because this number or this number or this number or this number, that is just telling you the distance between fx and L. This is telling you distance between x and a. This is telling you distance between x and 2. That is why I say that whenever function values are at a distance of epsilon from the limit, x values will be at a distance at most by epsilon by 3 from 2, where we are evaluating the limit. So in this way,
we can obtain a value of delta whenever we are given well. Now, in this example, you can replace epsilon by some number. For example, I replace epsilon by, for example, 0.01. Delta will be 0.01 divided by 3. Of course, if I consider epsilon to be any small number, delta will be another small number. In case of linear function, that is this example involves, epsilon and delta will be directly related. And epsilon is related to y values, whereas delta is related to x values. You can see that epsilon by delta is equal to 3, which is nothing but the slope of the line y is equal to 3x minus 5. So in case of a linear function, this is a very simple task. कि एप्सिलॉन गिवन हो तो मैं डेल्टा कैसे मालूम करूँगा. Whereas अगर मैं इसके बजाय linear function के बजाय मैं non-linear function ले लूँ, and the simplest non-linear function is quadratic function. So limit of x square minus 4 as x approaches 3. We know that it is 5. And let us start playing the game of epsilon and delta. Function minus limit. Function is x square minus 4. The limit is 5. So function minus limit is less than epsilon. This simplifies to what? X square minus 9 is less than epsilon. Now, our objective is to find out delta, which should be satisfying this condition. X minus 3 is less than delta because हम limit 3 पे निकाल रहे हैं. So x minus 3 is less than delta. यार व्हाट्सएप पे शेयर ना करें, मैं सबको ईमेल करता हूँ, ईमेल देखा करें अपना. आई डोंट नो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो आप एक्सक्लूसिव आपकी क्लास का है या इसमें और लोग भी शामिल हैं. वैसे तो खैर मुझे कोई इतराज़ नहीं है, और लोग शामिल क्लास अटेंड कर लें, रिकॉर्डिंग देख लें, नो प्रॉब्लम. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग डिस्टर्ब करते हैं क्लास को. सो आई होप आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ऐसा ना हो जो कि डिस्टर्ब करे क्लास को. कमिंग बैक टू दिस प्रॉब्लम, we know that the limit of x square minus 4 as x approaches 3 is equal to 5. So function minus limit has to be less than epsilon, and x minus 3 has to be less than delta. Now x square minus 4 minus 5 becomes x square minus 9 less than epsilon. And I can factorize 1 and write down this x minus 3 mod into x plus 3 mod is less than epsilon, which can further be simplified to this form. Because mods are involved, so positive numbers are there, तो inequality change किए बगैर मैं multiply divide कर सकता हूँ. इसलिए अब x minus 3 is less than epsilon upon mod x plus 3. Now this second, this equation, inequality 2, can also be written as 3 minus delta, say 3 plus delta, की x values जो हैं वो 3 minus delta से 3 plus delta होनी चाहिए. इसका मतलब है x values जो हैं वो 3 के बहुत करीब होंगी, लेकिन 3 के बराबर नहीं होंगी. चुनाचे whatever is there in the denominator of inequality 3 is x plus 3, so that will be close to 6, but will not be equal to 6. Now, 3 means epsilon upon mod x plus 3 is approximately epsilon upon 6. So that this inequality 3 can be written as x minus 3 is less than epsilon upon 6. Now, this 2, the inequality involving delta, and this inequality 4 that involve epsilon upon 6, both have x minus 3 mod on the left hand side. So naturally, we can say that 2 and 4 imply that delta is approximately epsilon 6 upon 6. It is only approximately, not exactly. That was the case in linear function. So
what's the reason that this is not exact? Because we found that जब हमने इसको rearrange करके x minus a less than epsilon divided by something लिखा, तो अब यहाँ पे सिर्फ epsilon involve नहीं हो रहा, x भी involve हो रहा है. Changing x will change everything. अगर मैं किसी और x 0.3 पे निकाल रहा था limit, if I change this 3, it will change. So x values will be close to some other number. Anyways, हम कह सकते हैं कि delta is equal to epsilon upon mod x plus 3, which is a function of both epsilon and x. Now, जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर epsilon की कोई value choose कर लें, मैंने choose की value epsilon is equal to 0.1. चुनाचे जो first inequality दी है, इसके हिसाब से x square minus 9 is less than 0.01. अगर मैं इसको x square minus 9 less than 0.01 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 9 minus 0.01 और 9 plus 0.01 के दरमियान x square की वैल्यूज होनी चाहिए. और अगर इस पूरी इनइक्वालिटी का मैं स्क्वायर रूट ले लूँ, दिस नंबर इज 8.99, दिस नंबर इज 9.01. जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो आई विल हैव 2.99833287 and 3.0016666. So x will lie between these two numbers. Now this number is 3 minus this, whereas this number is 3 plus this. So ये वो जगह है जहाँ डेल्टा आना चाहिए था, मगर ये दोनों जगह नंबर सेम नहीं है, जिसकी वजह से हमने कहा था यहाँ पर कि डेल्टा इज अप्रॉक्सीमेटली एप्सिलॉन बाई 6. तो एप्सिलॉन बाई 6 क्या है? एप्सिलॉन बाई 6 है 0.001666666, जबकि यहाँ पे इधर भी ये नंबर नहीं है और इधर भी ये नंबर नहीं है. So whenever you have non-linear functions and you are talking about epsilon delta, choosing an epsilon will not find delta uniquely. दोनों sides पर 3 minus delta, 3 plus delta जो usually होना चाहिए, so delta will not be exactly the same as in the previous case. So what's the problem? Problem is non-linearity. And I'll show that in a picture. But still, we can say that in this problem, we've obtained delta to be approximately epsilon by 6. Approximately, not exactly. And we note few things about all this business. Only for linear function, delta can be exactly determined. But for non-linear function, it can only approximately determined. However, in general, delta depends on choice of epsilon. इसका मतलब है delta will always be a function of epsilon. You change epsilon, you will change delta. Moreover, अच्छा मुझे ख्याल हो रहा था कि मैं इसी एग्जांपल में जो मैंने अभी डिस्कस की, जिसमें मैंने epsilon जो है वो चूज किया 0.01, इसमें epsilon 0.0001 चूज करूँ और फिर ये सारे काम करूँ. So I hope you can do that, and you will find that delta will be different. Delta will be some epsilon by 6, but since epsilon has changed, delta will change. So that gives you the idea that epsilon is all delta is always a function of epsilon. But in the case of nonlinear function, we just saw that epsilon was not only depending on delta was not only depending on epsilon, but it was also depending on x. So that is mentioned here in the note. In general, delta depends on the choice of epsilon. Delta is a function of epsilon. Moreover, delta may be a function of not only epsilon, but x also. And this very fact will be useful when we go for a full-fledged study in real analysis. Somewhere, at some point of the course, this will be a helpful idea, that delta is not only a function of epsilon, but can be a function of x also. For computation of limit and proofs of properties and theorems,
we first fix delta and then proceed further to achieve what we need. मैंने जो लिमिट की एग्जांपल जो आप लोगों ने से मैंने शेयर की थी, कंप्यूटेशनल लिमिट, और आप लोगों ने बताया था कि हाँ आपने इस तरह से काम किया है लिमिट निकालने के लिए कंप्यूटेशंस का, तो उसमें डेल्टा चेंज करते हैं, डेल्टा फिक्स करते हैं, फिर फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर डेल्टा छोटा करते हैं, फिर फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट, और छोटा करते हैं डेल्टा लेफ्ट साइड पे ए माइनस डेल्टा, राइट साइड पे ए प्लस डेल्टा, और देखते हैं कि एफ ए माइनस डेल्टा और एफ ए प्लस डेल्टा की वैल्यूज जो हैं वो किसी एक नंबर की तरफ जा रही नहीं जा रही। तो कंप्यूटेशन में भी डेल्टा जो है पहले फिक्स किया जाता है, एप्सिलॉन को नहीं छेड़ा जाता। लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वेरिंग एप्सिलॉन डेल्टा में चेंज, फिक्सिंग डेल्टा एप्सिलॉन में वेरी फॉर डिफरेंट फंक्शन। ये भी हम देख चुके हैं स्ट्रेट लाइन की एग्जाम्पल। मैं एप्सिलॉन चूज करता हूं तो ये वाई एक्सिस पे एक इंटरवल बनाता है जिसके सेंटर में लिमिट होती है, कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल जो एक्स एक्सिस में बन रहा है जिसके सेंटर में ए है। लीनियर फंक्शन के केस में तो ये सिमेट्रिक इंटरवल बनेगा, यानी ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा तक। लेकिन अगर आपके पास कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो एप्सिलॉन आपके लिए वाई एक्सिस पे तो एक सिमेट्रिक इंटरवल बना रहा है फ्रॉम एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन, बट अगर एल प्लस एप्सिलॉन की प्री इमेज लें, एल माइनस, हेलो somebody saying something? Is my voice clear? Yes, sir, it's clear. Okay. So I was saying that epsilon से choose करके हम y axis पे एक symmetric interval बनाते हैं, l minus epsilon से epsilon, मगर अगर फंक्शन कर्व की शक्ल में है तो l plus epsilon की जो प्री इमेज है वो a plus समथिंग पे आएगी, l minus epsilon की प्री इमेज जो है a minus समथिंग पे आएगी। तो ये जो a minus समथिंग और a plus समथिंग में जो समथिंग है ये सेम नहीं होगा, यानी नॉन लीनियर फंक्शन के केस में मुझे डेल्टा यूनिक नहीं मिलेगा। With this comment, let us proceed further. मैंने ये जिक्र किया एक दो दफ़ा कि हम एप्सिलॉन डेल्टा को प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रॉपर्टी लिमिट की आपने पढ़ी है कि अगर एक फंक्शन की लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए L1 है और एक और फंक्शन की लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए L2 है, तो फिर इन दोनों का जो सम फंक्शन है as x approaches a, the limit of the sum function will be the limit sum of the limit L1 plus L2, which is for beginners appear to be very obvious results, but every obvious result require a proof in mathematics. Even you know the fact that 1 plus 1 is 2, but at some stage, definitely an advanced stage, we also require to prove really whether 1 plus 1 is 2 or not. तो खैर वो स्टेज अभी बहुत दूर है, लेकिन ये ऑब्वियस रिजल्ट प्रूव करने के लिए हम एप्सिलॉन डेल्टा की प्रॉपर्टीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। I hope your calculus teacher must have shared these kind of proofs with you while studying Cal 1, Cal 2, blah blah. Did anybody went through these proofs? All these proofs are given in calculus books like Anton, like Thomas Finney, like Sikorsky. उनमें लिमिट्स के लिए, कंटिन्यूटी के लिए, डेरिवेबिलिटी के लिए इस तरह के प्रूफ्स दिए हुए हैं। If you want, I can go through this proof in order to describe what is what this proof is all about. Should I? Yes, sir, एक बार स्किम थ्रू कर दें, वैसे पढ़ा हुआ तो है लेकिन आप स्किम थ्रू कर दें एक बार। I don't mind because मुझे ये सब चीज़ें इस्तेमाल करनी है फ्रीक्वेंटली अपनी कोर्स के अंदर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपके टिप पर हो ना हो, कम से कम आपके जहन में कुछ विजन हो इसके बारे में, क्योंकि
सडनली कहीं हम कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे किसी प्रूफ में और वो इसी किस्म की चीजें होंगी, तो यू शुड बी फेमिलियर विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स. सो लेट मी सर स्टार्ट फिर द आप प्रूफ. एक बार करते हैं. Yes, yes. I have no issue with that. मैं वो आइंस्टाइन ने कहा था कि चीज़ों को जितना आसान बना सकते हो बनाओ, मगर नॉट मोर देन दैट. तो I believe in making things as simple as possible so that students absorb it comfortably. ना हमारे पास दो फैक्ट दिए हुए हैं. हर थ्योरम जो होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक हाइपोथेसिस होता है और एक कंक्लूजन होता है. हमारे हाइपोथेसिस में क्या है कि फंक्शन एफ की लिमिट L1 है एज एक्स अप्रोचेस ए और जी की लिमिट L2 है एज एक्स अप्रोचेस ए. और कंक्लूजन क्या है कि सम फंक्शन जो है उसकी लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए हमारे पास L1 प्लस L2 आनी चाहिए. सो वी डेवलप द प्रूफ ऑन द बेसिस ऑफ दीज हाइपोथेसिस जो हमें गिवन कंडीशंस हैं. लिमिट एक्स अप्रोचेस ए ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू L1 means के I can find some epsilon and see. चूंकि लिमिट नंबर 1 है तो मैंने एप्सिलॉन 1 कर दिया. मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर मैं एक डेल्टा इस्तेमाल करूं तो डिफरेंट फंक्शन के लिए एप्सिलॉन डिफरेंट हो सकता है. तो इसलिए मैंने पहले फंक्शन के लिए जो एप्सिलॉन है उसका नाम एप्सिलॉन 1 रख दिया है. ये छोटा नंबर. फॉर एवरी एप्सिलॉन 1 पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट. आई होप यू आर फेमिलियर विद दिस नोटेशन, देयर एग्जिस्ट. अगर नहीं है तो ये यस उल्टा सर. उल्टा कैपिटल ई जो है देयर एग्जिस्ट होता है. For every epsilon 1, there is delta positive such that fx minus L1 is less than epsilon 1 whenever x minus a is less than delta. अच्छा, ये तो मैंने रीड आउट कर दिया, मगर इस लाइन को जिसको मैंने इक्वेशन लाइन 1 कहा हुआ है, इसको हम यूं भी पढ़ते हैं. Whenever fx is close to L1 and closeness is described by epsilon 1. Whenever fx is close to L1, x is close to a and closeness here is described by delta. कितना close. तो इसके लिए हमने लाइन 1 लिख ली, इसके लिए हमने लाइन 2 लिख ली. सिर्फ फर्क ये है कि दूसरे फंक्शन के लिए हमने एप्सिलॉन 1 की बजाय एप्सिलॉन 2 कहा, इसलिए कि एक ही डेल्टा इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों फंक्शन के लिए एप्सिलॉन सेम होना जरूरी नहीं है. लेकिन both these epsilons, epsilon 1 and epsilon 2, are definitely small numbers. So we have line 2, gx is close to L2 whenever x is close to a. Now we have to prove that this function has limit L1 plus L2. तो जब fx की लिमिट L1 है जिसकी वजह से हमने लिखा fx माइनस L1 और प्रूफ ये करने जा रहे हैं कि इस सम की लिमिट ये है, तो मुझे इसी तरह का एक्सप्रेशन लिखना है. लिहाजा मैंने लिखा सम फंक्शन माइनस सम ऑफ द लिमिट, इसको मॉड में रखा एंड देन वी स्टार्ट प्लेइंग विद दिस. तो पहले तो मैंने इस फंक्शन के सम को ब्रैकेट में रखा हुआ है, लिमिट्स के सम को ब्रैकेट में रखा है, लेकिन ब्रैकेट हटा दिए हमने. दे आर ऑल रियल नंबर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से हम प्लेस चेंज कर सकते हैं. तो एफ एक्स के साथ कंबाइन किया L1 को, जी एक्स के साथ कंबाइन किया L2 को. अब एफ एक्स माइनस L1 एक चीज़ है मॉड के अंदर और जी एक्स माइनस L2 एक चीज़ है मॉड के अंदर. मॉड ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके हमने इसके और इसके मॉड्स को अलग कर दिया. लिहाजा जो जब अलग कर दिया मॉड, तो ये जो रिजल्ट है ये इस नंबर से बड़ा होगा या कम से कम बराबर होगा. तो अब हमारे स्टेटमेंट ये है कि सम फंक्शन माइनस सम ऑफ लिमिट इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स माइनस L1 प्लस ई एक्स माइनस L2. बट one says that fx minus L1 is less than epsilon 1, whereas 2 says gx minus L2 is less than epsilon 2. Under what condition? Whenever x is very close to delta. So whenever this, Jonache, where do we reach? Using 1 and 2. Now we do what? We say that epsilon be 1 be a small number, epsilon 2 be a small number. Like एक नंबर होगा 0.001, दूसरा नंबर होगा 0.003. तो इनका सम जो है 0.004 भी स्मॉल नंबर है, तो उसको हम एक नया नाम दे देते हैं एप्सिलॉन. एंड राइट इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 की जगह लिखेंगे. तो अब लाइन नंबर 3 क्या शक्ल इख्तियार कर लेगी? दैट some function minus sum of the limit under the mod is less than epsilon
and I should read it कि some function की values will remain very close to L1 plus L2 whenever x is very close to delta. That simply means the limit of the sum function is equal to L1 plus L2. So the proof is complete. So such simple, trivial things that आप समझते हैं कि जी very obvious हैं, लेकिन when we go and as a student of mathematics we go to prove them, and we should know classical steps that are used to prove things like this. एक एग्जाम्पल मैं और डिस्कस कर रहा हूँ. ये तो मैंने डिस्कस कर दी लिमिट वाली, और लिमिट में भी सिंपल वाली. ये सिंपल क्या है? सम फंक्शन. यार ये मुझे तंग कर रहा है मेरा कंप्यूटर, और किसी वक्त रीस्टार्ट ना हो जाए. बार बार कहता है कि इसको अपडेट करें. एनीवेज, मैंने सिंपल वाला एग्जांपल कंसीडर किया. डिफरेंस ऑफ फंक्शन में लिमिट का डिफरेंस आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन में लिमिट का प्रोडक्ट आ जाएगा, क्वोशिएंट ऑफ फंक्शन में क्वोशिएंट ऑफ लिमिट आ जाएगी. लेकिन उसमें फिर L1 अपॉन L2 होगा तो L2 0 नहीं होना चाहिए. एक एग्जांपल मैं फिर कंटिन्यूटी से डिस्कस कर रहा हूँ. That I have two functions f and g, both are continuous at x is equal to a. So this theorem claims that the product function will also be continuous at x is equal to a. You know that continuous functions को add करो तो continuous रहेगा, subtract करोगे तो continuous रहेगा, product लोगे तो continuous रहेगा, quotient लोगे तो continuous रहेगा. लेकिन उस केस में denominator जो है 0 नहीं आना चाहिए. बस we know that in all such problems. Now to prove this thing, we use epsilon delta property again. और remember कि जब function continuous है तो limit की जगह fa आता है, because a function is continuous if its value is equal to the limit. तो हमने वही sentence लिखा है जो पहले लिखा था, लेकिन L1 की जगह fa लिख दिया क्योंकि अब function continuous है. वही epsilon 1 है, वही x close to delta है, लेकिन अब x माइनस a मॉड को पहले हमने ग्रेटर देन 0 लिखा था क्योंकि लिमिट में x इक्वल टू a होना जरूरी नहीं है, बट कंटिन्यूटी में x इक्वल टू a इज अलाउड because limit of the value of the function is equal to limit of the function. So these are the differences in the line 1 of this proof and the line 1 of the previous proof. So whenever I choose an epsilon 1, there will be a delta such that this for the function f, and for function g, which is also continuous at a, so there will be some epsilon 2. For every epsilon 2, there will be a positive delta such that gx minus ga is less than epsilon 2 whenever x minus a is less than delta. So you can see the difference between the line 2 of the previous proof and the line 2 of this proof. अब मुझे ये प्रूफ करना है कि फंक्शन प्रोडक्ट फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है. तो प्रोडक्ट फंक्शन की लिमिट जो है fx into gx की लिमिट fa into ga होनी चाहिए. So we start with this consideration because हमें इसको small number के से किसी small number से less proof करना है. तो हम इससे अपने मतलब की चीज algebraically construct करते हैं. So starting with gx fx into gx minus fa into ga, हमने ऐड किया fx into ga, subtract भी किया fx into ga. Then we see that इस टर्म में और इस टर्म में fx कॉमन है, लिहाजा fx कॉमन लिया तो बाकी बचा gx माइनस ga. इन दो टर्म्स में ga कॉमन है, लिहाजा ga कॉमन लिया तो अब बचा, ये मैंने लिखने में गलती कर दी है, ये ऐड किया, ये सब्ट्रैक्ट किया. तो मुझे लेना चाहिए था क्या, मुझे ga कॉमन लेना चाहिए था, है ना. हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है. मैं इसको रीराइट करके आपसे शेयर करूंगा, लेकिन स्टेप्स इसी तरह से होंगे कि इन दोनों में से ga कॉमन लूँ तो fx माइनस fa बचेगा, और इन दोनों में से fx कॉमन लिया
सही तो है यार, सही है, सही है, तो सही आपने है, सही किया हुआ है, सही किया हुआ, लेकिन सही किया हुआ है। हाँ हाँ, सही है। सो अब क्या है कि जब मैं अब ये दो चीजों का सम हो गया, और मॉड जब हटाते हैं सम पे से, तो वो लेस देन इक्वल हो जाता है। तो हर जगह मैंने मॉड लगाया हुआ है और सम को अलग कर दिया है, वही प्रॉपर्टी जो पहले इस्तेमाल की थी। एंड देन हम देखते हैं कि लाइन 1 कहती है कि एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन 1, जबकि लाइन 2 कहती है कि जी एक्स माइनस जी ए इज लेस देन एप्सिलॉन 2। तो इसकी जगह एप्सिलॉन 2 रखा और इसकी जगह एप्सिलॉन 1 रखा, मगर किस कंडीशन में? 1 एंड 2 बोथ कहते हैं कि वेन एवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो जब मैं जी एक्स माइनस जी ए और एफ एक्स माइनस एफ ए को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो मुझे एक कंडीशन कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए, because this is happening under this condition. Now this line 3 is our current stage that compares with this original structure जिससे कि हमने काम शुरू किया था. This structure is strictly less than this thing. Now mod fx चूंकि close to fa है, so it has to be finite. Similarly ga limit है, value है function की, it has to be finite. Remember हमने कहा था function is defined at a point means what? It is real, finite and unique. Limit exist करती है, real, finite and unique. So ये mod fx और mod g दोनों finite numbers है। चुनाचे किसी भी finite number को आप small number से multiply करेंगे तो result small आएगा। अरे भाई smallness थोड़ी सी बढ़ जाएगी अगर ये थोड़ा सा बड़ा number हुआ, मगर आप नंबर चूज करके देख लें, अगर 0.001 से काम नहीं चल रहा, 0.003 से काम नहीं चल रहा, तो एप्सिलॉन्स को और छोटा कर दें, क्योंकि इन दीज प्रॉपर्टीज फर्स्ट चॉइस इज एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन। कितना छोटा, जितना छोटा आप चाहें। तो 0.001 आपको लग रहा है कि 3 से मल्टीप्लाई होकर बड़ा हो जाएगा, तो 0.00005 ले लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई होकर कुछ बड़ा नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि अब ये पूरा नंबर यहाँ पे जो लिखा हुआ है, that is a small number. And then line 3, starting from here, one side, the other side, this replaced by epsilon becomes this line, fx into gx minus fa into ga is less than epsilon. इसका मतलब है product function की value fa into ga के करीब करीब होगी whenever x is close to delta. And that is the indication that f into g is continuous at x is equal to a. So this is another demonstration of the use of epsilon and delta for proving things. हाँ, यहाँ मैंने एक step extra लिखा हुआ है कि fx into gx is basically product function value at x, and fa into ga is the product function value at a. So इस line को मैं यूं भी लिख सकता हूँ. Anyways, so that's all about epsilon delta issues. Of course, this discussion that we just have had is by no means exhaustive. Anyone who want to go through all these things again, मैंने फेसबुक पोस्ट पे आर्टिकल 1.4 का जिक्र किया है और एक्सरसाइज 1.4 एंटन के 10th एडिशन का, उसमें आपको बेतहाशा एग्जाम्पल्स भी मिलेंगी, एक्सरसाइज भी मिलेंगी। एंड इफ यू वांट टू अपना हाथ साफ करना चाहते हैं तो डू एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा हाथ साफ होगा। सो गोइंग बैक टू माय रिव्यू ऑफ कैलकुलस, एंड हमने एक कंप्यूटेशन ऑफ लिमिट डिस्कस कर लिया था, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट डिस्कस कर लिया था। फिर इस फंक्शन की सिर्फ एक पिक्चर हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ज्योमेट्रिक पिक्टोरियली या ग्राफिकली लेफ्ट कनेक्टेड, राइट नॉट कनेक्टेड, लेफ्ट कनेक्टेड, ब्ला ब्ला चीज़ें हमने डिस्कस की थी। At x is equal to -3, the left limit is different, right limit is different. At x is equal to 0, left limit is 0, but right limit is -infinity.
at x equal to 4, the right limit is positive infinity, but the left limit, the function is oscillating infinitely close to x is equal to 4. यहाँ limit exist नहीं करती क्योंकि it can be any number. When you are very, very close to 4, it can be any number between 1 and 3. So the limit does not exist because limit has to be unique. Even if it is one-sided limit, it has to be unique. Continuity of function, and I think I had discussed these ideas. Everywhere where we used limit L, that is replaced by function value, because continuity of function means limit of the function equals value of the function. And for continuity, we can talk about one-sided continuity, continuous from left, continuous from right. अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेफ्ट लिमिट के बराबर है तो कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट और ग्राफ कनेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट. अगर राइट लिमिट के बराबर है फंक्शन वैल्यू तो कनेक्टेड फ्रॉम द राइट या राइट कंटिन्यूस है. Function will be continuous if it is connected from both sides. That means left limit, right limit function values are all same. Discontinuity, and there can be different cases of discontinuity. In its crude form, function is discontinuous at a, x is equal to a, if out of the three things, the value, the left limit, the right limit, इनमें से कोई एक चीज different हो तो function discontinuous है, और तीनों चीजें बराबर है तो function continuous. So, in general, a function is discontinuous at a point. If it is disconnected, its graph is disconnected there. Child free, mobile and free. Druag mo, alam. Saan dito tada dat inor sok ng lecture uli. Tay lecture box eh. Ay मत क्वेश्चन से lecture रखो. That's okay. अच्छी lecture शुरू. अगर आप लोग उर्दू बोल रहे हैं तो मुझे भी समझ में आ जाए. सर ये नकीबुल्लाह का माइक खुला है. नकीबुल्लाह का माइक खुला है सर. तो नकीबुल्लाह तुम उर्दू में बात कर लो ना यार. पश्तो है सर. सॉरी सर वो एक दोस्त आ गया हो सर. अच्छा तो अपना माइक बंद करके दोस्त से बात करो. ओके ओके सही. ठीक है. अच्छा तो discontinuous from left का मतलब है value of the function is not equal to left limit. Discontinuous from right means function value is not equal to the right limit. Then it's discontinuous from both sides. कि function value तो exist करती है लेकिन ना वो left limit के बराबर है ना right limit के बराबर है. Right limit भी exist करती है, left limit भी exist करती है, value भी exist करती है, मगर तीनों different हैं. तो discontinuous from both sides. It means all three are different. And there is a concept of removable discontinuity. उसमें ये कि function value exist करती है मगर limit के बराबर नहीं है, यानी left limit और right limit बराबर है लेकिन function value different है. Why it is called removable? Because you can redefine the function so that function value जो कि different है limit से वो limit के बराबर हो जाए तो function की discontinuity खत्म हो जाएगी. इसलिए इसको removable discontinuity कहते हैं. हम रिमूव नहीं करते डिस्कंटिन्यूटी को, लेकिन इस डिस्कंटिन्यूटी को जिसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यानी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों बराबर हैं लेकिन वैल्यू द फंक्शन कहीं और है, तो इसका मतलब है देयर इज अ होल इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एंड दैट इज अ रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी. एप्सिलॉन डेल्टा की प्रॉपर्टीज के जरिए इस किस्म की चीजें प्रूव कर सकते हैं और हमने f into g is continuous at some point का प्रूफ अभी डेमोन्स्ट्रेट किया था. Just in view of these different types of discontinuities, look at this graph. From left sides coming like this, that means as x approaches -2 from left side, it's going to minus infinity. But from right side, it's coming to -1. So right limit is -1, left limit is minus infinity. The function is not defined x is equal to -2 because there is a hole. So it is a discontinuity. Whereas this point, here the graph is broken, so it's a discontinuity. But here the graph is not broken. At x is equal to 3, function value is 4 because it is filled circle. Filled circle का मतलब है यहाँ value function की है. Whereas right side पे function जिस भी formula से define हो, लेकिन right side से हम graph पर travel करें तो
graph is coming to the height 4. So right limit is 4, whereas left limit is also 4. So यहाँ पे ग्राफ में सडन चेंज है स्लोप का, लेकिन कंटिन्यूस है. Let's come to one of the most important concept in calculus as well as in real analysis, the derivability of a function. Now, I keep on repeating the concept of derivability or differentiability while teaching calculus as well as teaching real analysis, because this is one of the most important ideas. Not that concept before this were not important. Everything is built upon the previous thing. Now, how the derivability concept is built upon the previous thing, we are talking about function. So we should know what function is. It is said to be derivable or differentiable at some point x is equal to a. If this limit exists, तो फंक्शन का आइडिया हमें पता होना चाहिए, हमें लिमिट का आइडिया पता होना चाहिए. Otherwise, I can't talk about derivability or differentiability in the true sense of the word. So function क्या होता है, function की लिमिट क्या होती है. मगर तीसरी अहम बात जो सोचने की है वो ये है कि लिमिट किस चीज की. यहाँ लिमिट जो है वो फंक्शन की नहीं निकाली जा रही है. x close to a यानी फंक्शन वैल्यूज at x close to a माइनस फंक्शन वैल्यू एग्जैक्टली एट a. इसका मतलब है जिस तरह कंटिन्यूटी के लिए फंक्शन का उस पॉइंट पर डिफाइन होना जरूरी था जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, इसी तरह डेरिवेटिव या डिराइवेबिलिटी जो है उसके होने के लिए फंक्शन वैल्यू एट द पॉइंट वेयर वी आर सीकिंग डिफरेंशिएबिलिटी या डिराइवेबिलिटी वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए. तो इन अ वे न्यूमरेटर इज द चेंज इन y, whereas denominator is x minus a, which is change in x. So change in y upon change in x, ये रेशियो है चेंज इन y और चेंज इन x की, जिसकी लिमिट निकाल रहे हैं. और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर हम फंक्शन को डिराइवेबल कह रहे हैं. So when this limit exists, it is called derivative of the function at x equal to a, जिसको हम डिनोट करते हैं किस तरह से, sometime f prime at a और dy by dx is equal to dy by dx at x is equal to a, where y is of course fx. This limit can also be written as this, कि मैं x approaches a के बजाय h approaches a करूं, h approaches 0 करूं, और x की जगह पर या तो a plus h लिखूं या a minus h लिखूं. a plus h कब लिखूंगा, जब मैं ये लिमिट राइट साइड से इवेल्युएट कर रहा हूँ, और a minus h कब लिखूंगा, जब मैं ये लिमिट लेफ्ट साइड से कैलकुलेट कर रहा हूँ. जब मैं ऊपर a plus h इस्तेमाल करूंगा, नीचे plus h इस्तेमाल करूंगा. जब मैं ऊपर a minus h इस्तेमाल करूंगा तो नीचे minus h इस्तेमाल करूंगा. So x is replaced by either a plus h और a minus h. जब x को तुम a plus h या a minus h से रिप्लेस करोगे तो डिनोमिनेटर या तो plus h बनेगा या minus h बनेगा. With plus h, this limit, if it exists, is called right hand derivative. With minus h, this limit is called the left hand derivative. अब अगर मुझे ये साबित करना है कि एक फंक्शन x is equal to a पे डिफरेंशिएबल या डिराइवेबल है, तो दरहकीकत मुझे ये दो लिमिट्स जो हैं ये निकालनी पड़ेंगी और ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों लिमिट्स बराबर हैं कि नहीं. यानी मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन लिमिट्स के जरिए निकालना पड़ेगा. अगर ये दोनों बराबर हैं तो फंक्शन डेरिवेटिव होगा. So the concept of derivability is based on limit of what, that is to be very clear. शुरू में बच्चे अक्सर ये करते हैं हरकत कि हमने क्वेश्चन दिया
कि प्रूफ करो कि फंक्शन जो है डिराइवेबल है, वो लिमिट निकाल के फंक्शन की लेफ्ट से और राइट से दे देते हैं और वो कंटिन्यूटी प्रूफ कर देते हैं बजाय डिराइवेबिलिटी के। जबकि डिराइवेबिलिटी प्रूफ करने के लिए इस एक्सप्रेशन की लिमिट निकालनी है, सिर्फ एफ की नहीं निकालनी। Note that in order that a function is derivable at x equal to a, the function must be defined there. fa अवेलेबल होना चाहिए, बगैर fa की अवेलेबिलिटी के फंक्शन डिराइवेबल नहीं हो सकता। Also that it can easily be shown that if a function is derivable at some point, then it is necessarily continuous there. However, the converse of this need not be true. हो सकता है किसी स्टेज पे मैं इस स्टेटमेंट का जो इन दो लाइनों में लिखा हुआ है ये प्रूफ करूं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम एग्जांपल। जी बोलिए। सर ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ये पूरा आपने कर लिया था। तो मुझे बताया क्यों नहीं, इतनी देर से सोने जा रही है? सर मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आखिरी के 2 पेजेस रहते थे हमारे सर। ये डिस्कस हो गया था। वाह 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 भाई, हम एक जमाना था कि क्लास में पहुंचते थे और बच्चों से पूछते थे कि हाँ भाई लास्ट टाइम कहाँ पहुंचे थे, तो बच्चे जो है हमें घुमाने के लिए कुछ ना कुछ बताते रहते थे और हम कहते थे कि नहीं अभी हमारा दिमाग इतना काम करता है कि हमें याद है कि लास्ट जुमला क्या कहा था हमने। लेकिन अब बुढ़े हो गए हैं, ना सिर्फ बुढ़े हो गए, ये कम वक्त लाइट ने और कनेक्टिविटी ने बड़ा परेशान किया हुआ है, जिसकी वजह से फोकस बहुत खराब हुआ है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल और फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव रूल्स बनना ये सब कुछ डिस्कस कर लिया था, डिफरेंशियल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी थी। हाँ सर अब नीचे जाए मैं आपको बताता हूँ। ये डिफरेंशियल प्रॉपर्टी, फंक्शन इंक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीजिंग। हाँ सर ये भी प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई थी। वाह 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 वाह, वेरी गुड। ये फिगर भी डिस्कस, सर हमने टर्निंग पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए थे, कॉन्केविटी भी डिस्कस की थी हमने। अरे भाई वाह 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 वाह, चलो रिपीट हो गया कोई बात नहीं। क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट्स भी डिस्कस हो गए थे। जी डिस्कस हो गए थे। ओहो, कॉन्केविटी और इंफेक्शन पॉइंट भी डिस्कस हो गए थे। इतनी देर से इतना जोर लगा रहा हूँ, तुम लोगों को रहम नहीं आया मुझ पे? एजम्पटोट सर एजम्पटोट सर नहीं, एजम्पटोट नहीं हुआ। ओके नहीं हुआ था, यहाँ पे रह गया। Okay. Pretty soon I'll consider some examples also for all the differential properties which are used for the analysis of a function. The last link, yani, from interval of increase and interval of decrease, जिससे कि हमें extreme values पता चल जाती हैं, और कॉन्केविटी अप और कॉन्केविटी डाउन, जिससे हमें पता चल जाता है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट है या नहीं है। आखिरी जो लिंक है एनालिसिस ऑफ फंक्शन का वो एसिम्पटोट्स का है। देयर आर 3 काइंड ऑफ एसिम्पटोट्स: हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ऑब्लिक। A line y is equal to k, which is a horizontal line, is said to be a horizontal asymptote of a function if, as x approaches positive infinity or negative infinity, y approaches k, which is something like in this figure. This blue is the graph of the function. As x approaches positive infinity, is coming closer and closer to the height 2. So y is equal to 2 is a horizontal asymptote, and both on positive infinity side and negative infinity side. For this function, y is equal to 2 is a horizontal asymptote. Vertical asymptote, a line x is equal to h, which is a vertical line, is a vertical asymptote of the function if, as y approaches positive infinity or negative infinity, x approaches a, which is these 2 red lines. If x approaches, y approaches minus infinity along this path, this part of the graph, x is coming closer and closer to 4, the line x is equal to 4, but never touching it. Similarly, minus 4. तो इसके 2 वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं, x is equal to 4 और x is equal to minus 4. हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, वर्टिकल एसिम्पटोट्स के अलावा हमारे पास ऑब्लिक एसिम्पटोट भी हो सकते हैं, like this line y is equal to a kx plus
h, here h are constants, is an oblique asymptote of the function if x approaches positive infinity or negative infinity. Y approaches kx plus h. Horizontal asymptotes और vertical asymptotes तो हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन ऑब्लिक एसिम्पटोट्स अक्सर और बेशतर नहीं करते. This figure here is again telling us about horizontal asymptote y is equal to 0 and vertical asymptote x is equal to 0. But this figure जिसका फंक्शन जो है बेसिकली ये रैशनल फंक्शन है, इसमें एक वर्टिकल एसिम्पटोट आ रहा है और एक ऐसा एसिम्पटोट आ रहा है जिसका मैंने अभी जिक्र ही नहीं किया. मैंने 3 एसिम्पटोट्स कहे ना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ऑब्लिक. तो ऑब्लिक जो था वो भी स्ट्रेट लाइन थी, मगर इस इंटरेस्टिंग ग्राफ के अंदर जो एक एसिम्पटोट आ रहा है, इस blue line which is representing the graph of the function, is per as x approaches infinity, y approaches x square. Now how to prove that, that is something else, but I just wanted to demonstrate not only oblique asymptote, there can be other curves that behave as asymptotes. So all these different properties of a function are used to sketch the graph of a function which is at least qualitatively correct. So I will switch back to some file where I consider these examples. Asymptotes की example मेरे पास और है कि नहीं है? Epsilon delta issues हैं. Let me open that file जिसमें मेरे पास शायद कुछ एग्जाम्पल ऐसी भी हो जिसमें did I share something on the Facebook? नहीं किया, वो अभी नहीं किया. So I'll come to well, again, next time when I start my discussion, I'll start with examples, 1 or 2 at least examples, जिसमें कि हम ये सारी जो differential properties हमने discuss की हैं, इनके जरिए हम curve sketching को revise करें. Okay, this starts another important domain of calculus and real analysis, the mean value theorems. इस कोर्स में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे. परहैप्स ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम किसी अच्छे टीचर ने आपसे इसका जिक्र कर दिया हो. मैं मीन वैल्यू थ्योरम्स को हमेशा यहाँ से शुरू करता हूँ. When I discuss mean value theorems as a topic, independent topic, for the first time in any course, so I start with intermediate value theorem. What does it say? It says that there is a function which is continuous over the interval AB. अच्छा, जब मैंने continuous कह दिया और ये interval जो है ये AB finite interval है, AB finite है, B भी finite है, so we will come to a theorem that a function continuous over a bounded interval must necessarily be bounded. लेकिन हमने इस वक्त इसको बिल्कुल प्रिमिटिव फॉर्म में कंसीडर किया है. 2 कंडीशन लगानी है, फंक्शन कंटिन्यूस भी हो और इंटरवल पे बाउंडेड भी हो. बाउंडेड होने का मतलब है व्हाट? देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स स्मॉल एंड कैपिटल M such that all function values lie between these two numbers for every x in the interval a to b. अच्छा जी, अगर इस ग्राफ पे हम कॉन्सेंट्रेट करें तो क्या आप वो 2 नंबर्स मुझे सजेस्ट कर सकते हैं जिसमें इस ग्राफ की तमाम वैल्यूज, जिसके y वैल्यूज जिन नंबर्स के दरमियान है? एक नंबर -3 ठीक है ना. तो -3 is playing the role of small m and +3 is playing the role of capital M, and these are bounds of the values of the function.
अब अगर मैं कोई टी ऐसा चूज कर लूं जो इन दो नंबर्स के दरमियान है, जिसमें फंक्शन की सारी वैल्यूज है और फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ये जो वैल्यू है फंक्शन की टी यानी हाइट ऑफ द ग्राफ, this must be attained by the function at least for one point in this interval. -3 से +3 तक कोई नंबर चूज कर लीजिए और उस नंबर की y is equal to that number horizontal line बना लीजिए. The function must attain that value. For example, मैं x is equal to 1 चूज कर लूँ, तो x is equal to 1, y is equal to 1 चूज कर लूँ, तो y is equal to 1 is attained as a y value for x somewhere here, and another place that same y is equal to 1 is attained here. But if I consider x is y is equal to -2, यानी t की वैल्यू में -2 ले लूँ, तो -2 भी फंक्शन की वैल्यू है एक for some value of c here. तो हमने ये कहा था कि हर if t is between the bounds of this function values, so that must be attained for at least one point in the interval. हम इसको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहते हैं. यूं भी कह सकते हैं कि -3 से 3 तक अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो हर नंबर y वैल्यू अटेन करेगा वो नंबर फॉर सम वैल्यू ऑफ x in the interval. For example, this interval is 0 to some number here. इसकी डिडक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है. डिडक्शन ये है कि अब फंक्शन कंटिन्यूस है, बाउंडेड है ओवर इंटरवल ए बी, और एफ ए और एफ बी की साइंस जो है वो ऑपोजिट है. अगर साइंस इसके ऑपोजिट हैं, फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब है ए एफ ए पॉइंट जो है अगर वो एक्स एक्सिस के नीचे है, तो बी एफ बी पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है. जब तो फंक्शन वैल्यूज के साइन ऑपोजिट होंगे. अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसने एक्स एक्सिस को जरूर क्रॉस करना है कम से कम एक पॉइंट. So in this region, y values are negative. In this region, y values are positive. So in between, there must be a point where the y value should be 0. Here it is positive, here it is negative. So in between, the function must be 0 at some point. This is deduction, जैसे मैंने कहा कि बड़ी important है. Numerical analysis में numerical method अगर आप पढ़े हैं, तो bisection method जो है वो इसी idea की बुनियाद पर develop हुआ है. Rolle's theorem, must have heard about this, haven't you? Yes, sir. So what does it say? इसका hypothesis क्या है? There are three things in the hypothesis. Function is required to be continuous over the closed interval, differentiable over the open interval, and the values of the function at the end point of the interval are same. Before I go to the conclusion, few word about कि जब continuity है तो closed interval लिया है, जब differentiability है तो open interval लिया है. Can anybody tell me the reason for that? Can you repeat, sir? I repeat my question. Continuity के लिए मैंने closed interval लिया है, यानी A और B शामिल है, लेकिन differentiability के लिए मैंने open interval लिया, यानी A और B शामिल नहीं किए. क्यों? हथियार डाल दिए तुमने? डाल दिया साथ कुछ कह रहे हो? सर, हथियार डाल दिया हमने. डाल दिए. भाई कंटिन्यूटी वन साइडेड होती है. ए पे राइट कंटिन्यूस हो सकता है, बी पे लेफ्ट कंटिन्यूस हो सकता है, यानी ग्राफ कनेक्टेड हो सकता है. इसलिए कंटिन्यूटी के लिए क्लोज इंटरवल ले लेते हैं. मगर डिफरेंशिएबिलिटी जो है that requires not only right hand derivative but left hand derivative also. हम पढ़ चुके कि अगर f a राइट लिमिट के बराबर है तो राइट कंटिन्यूटी है.
अगर एफ बी लेफ्ट लिमिट के बराबर है तो लेफ्ट कंटिन्यूटी है, लिहाजा कंटिन्यूटी तो क्लोज इंटरवल पे ले लेते हैं। ए से पहले क्या हो रहा है, बी से बाद में क्या हो रहा है, उसकी फिक्र नहीं करते। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी तो है ही टू साइडेड कॉन्सेप्ट। जब मैंने डिफरेंशिएबिलिटी या डिराइवेबिलिटी मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इससे बड़ी बारीकियां निकल के आएंगी। मैं ए पे डेरिवेटिव नहीं निकाल सकता। वो जो मैंने आपको एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच की लिमिट कहा था, वो तुम राइट साइड से तो निकाल लोगे, हो सकता है एग्जिस्ट भी करे। लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे मैंने दिया ही नहीं तुम्हें फंक्शन। मैंने कहा फंक्शन जो है वो इन दो नंबर्स के दरमियान है। जब लेफ्ट साइड में फंक्शन अवेलेबल नहीं है तो वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है एफ ए माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच कैसे निकालोगे? सो यू रिमेंबर दिस पॉइंट, और अगर कागज पेंसिल है तो नोट कर लो कि कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल पे ली जा सकती है इसलिए कि वन साइडेड कंटिन्यूटी हमारे पास अवेलेबल होती है। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो वन साइडेड नहीं होती। डिफरेंशिएबिलिटी एक लिमिट है जिसमें हमें राइट हैंड डेरिवेटिव भी चाहिए और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी चाहिए। ए पे मेरे पास राइट हैंड डेरिवेटिव हो सकता है लेकिन लेफ्ट हैंड नहीं है अवेलेबल। बाय स्ट्रक्चर ऑफ दिस होल स्टेटमेंट, एक्स इज इक्वल टू ए के लेफ्ट पे फंक्शन नहीं है, एक्स इज इक्वल टू बी के राइट पे फंक्शन नहीं है। तो बी पे लेफ्ट डेरिवेटिव तो आ सकता है, राइट डेरिवेटिव नहीं आ सकता। इस फिगर से कंफ्यूज नहीं होना, ये तो सिर्फ कंक्लूजन समझाने के लिए है। तीसरे पॉइंट ये है कि एंड पॉइंट्स इंटरवल पे जो फंक्शन वैल्यू सेम है, then there exists at least one point C between A and B where the derivative must be 0. देखो भाई, ए एफ ए ये है, इसने तो एक्स एक्सिस बनाया है लेकिन मैं इसको ए एफ ए कहूंगा। ये बी एफ बी है, यानी यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एफ ए है, यहाँ फंक्शन की वैल्यू एफ बी है, सेम है। अब कंटिन्यूटी की वजह से ग्राफ ने यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड होना है। डिफरेंशिएबिलिटी की वजह से हर पॉइंट पे टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट करनी है। तो जब इसने यहाँ से ऊपर जाना है और फिर वापस यहाँ आना है तो इसका मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होना है। हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है इनसाइड, तो एक ना एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जरूर बनेगा। दिस इज द मैसेज ऑफ रोल्स थ्योरम, and in this course later on we will be considering this theorem again and extensive proof भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। The next mean value theorem is the mean value theorem, यानी अगर सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम कहा जा रहा है तो इससे मतलब है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें और रोल्स थ्योरम में क्या फर्क है? रोल्स थ्योरम में हाइपोथेसिस के तीन पार्ट्स हैं, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है और एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम है। जबकि यहाँ पे कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है एंड दैट्स इट। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है कि अगर कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है ओवर द इंटरवल ए बी, then there again note that continuity closed interval पे, differentiability open interval पे, then there exists at least one point in between A and B where the derivative will be same as a secant line. You know FB minus FA divided by B minus A, ये slope है, किस line का slope है? Look in this graph. अगर मैं A और B ये ले लूँ, यहाँ पे ये पॉइंट है ए एफ बी स्टार्टिंग पॉइंट, ये है बी एफ बी। अब ग्राफ जो है ब्लू, दिस इज द फंक्शन। थ्योरम ये क्लेम कर रही है कि ए और बी के दरमियान अगर फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस का मतलब है कहीं ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है हर पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट करता है। तो थ्योरम अभी कह रही है कि किसी ना किसी पॉइंट पर अगर मैं ये लाइन बनाऊं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ, एंडिंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ, तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप है एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो इन बिटवीन मुझे कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा कि वहां पे टेंजेंट लाइन जो है उसका स्लोप वही होगा जो इस लाइन का स्लोप है। रिमेंबर डेरिवेटिव इज टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। This fb minus fa divided by b minus a is the slope of this line, which we call secant line. So this is the message of Lagrange theorem. और
यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नोटेशन जो है वो एक इंट्रोड्यूस की है। अक्सर और बेशतर इस तरह से भी लिखी जाती हैं थ्योरम, रोल्स थ्योरम भी इस तरह से लिखी जा सकती है कि इंटरवल को ए से बी लिखने के बजाय इंटरवल को ए से ए प्लस एच लिखा, और एच भी जो है वो एप्सिलॉन और डेल्टा की क्लास का है, लेकिन उतना छोटा नहीं। तो फंक्शन अगर ए से ए प्लस क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है और ए से ए प्लस ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबल है, अब ए और ए प्लस एच के दरमियान एक पॉइंट होगा जहां पे यही कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो वो उस पॉइंट को हमने कहा टी, और टी कह के हमने क्या कह दिया, एफ प्राइम, ये कुछ गड़बड़ दिख रही है मुझे, आई थिंक इट शुड बी ए प्लस टी एच, हाँ इट हैज टू बी ए प्लस टी एच। देखो ये जो पॉइंट सी है, फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट सी, ए और ए प्लस एच के दरमियान है ना, तो ए से ये पूरा एच अगर टी इक्वल टू 1 हो जाए तो बी पहुंच जाएगा, टी इक्वल टू 0 हो जाए तो ए पहुंच जाएगा, लेकिन टी 0 और 1 के दरमियान रहे तो ये इन बिटवीन रहेगा। तो सी की जगह ए प्लस टी एच इस्तेमाल किया। चुनाचे इसको रीअरेंज करके अक्सर यूं भी लिखा जाता है कि एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू ए प्लस टी एच, इस तरह से भी लिखा जाता है। ये नोटेशन जो हैं हमें इन मीन वैल्यू थ्योरम्स को एक्सटेंड करने के लिए यूजफुल होंगे। और मैं यहाँ ये कमेंट कर दूं कि दिस इज द फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम और फर्स्ट ऑर्डर मीन वैल्यू थ्योरम। We can go for higher order mean value theorem, whether we go in this course or not, but there are. एक और थ्योरम है सर प्लीज ये लास्ट वाला दोबारा समझा दें। नोटेशन, यस। अच्छा मेरी दुनिया ए से ए प्लस एच है, ठीक है, मैं इंटरवल को दुनिया कह रहा हूँ, जिसको मैंने पहले ए बी कहा था अब मैं उसको ए से ए प्लस एच कह रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने ए बी कहा था तो मैंने कहा था ए बी के दरमियान कोई पॉइंट सी, तो एक सी ये है, एक सी ये है। लेकिन जब मैंने नोटेशन चेंज कर दी ए से ए प्लस एच, तो मैं सी की जगह इस्तेमाल कर रहा हूं ए प्लस टी एच, वेयर टी इज बिटवीन 0 and 1। अच्छा अगर टी 0 हो गया, इनफैक्ट ये भी सही नहीं लिखा हुआ, ये भी टी ब्रैकेट छोटा होना चाहिए। मैं अगर अलाउ कर दूं टी इक्वल टू 0, जब टी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो एफ प्राइम ए होगा ना, एफ प्राइम ए तो अवेलेबल ही नहीं है। द पॉइंट इज दैट ए प्लस टी एच कहाँ है, अगर टी 0 and 1 के दरमियान है तो ए प्लस टी एच जो है वो ए और ए प्लस एच के दरमियान। टी की वैल्यूज हम क्या कह रहे हैं, इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0 and 1, तो ए प्लस टी एच विल बी वेयर, यू थिंक अबाउट दैट, कि अगर टी 0 से 1 इन बिटवीन, अगर टी 0 and 1 के दरमियान है तो ए प्लस टी एच किस किस के दरमियान होगा, ए एंड बी के, ए एंड बी या ए एंड ए प्लस एच के, ठीक है। तो ये सी का जो जो यानी मिडिल वैल्यू की बात हो रही है, जिसको पहले हमने नाम सी दिया था, ये एक नया तरीका है उसी मिडिल वैल्यू को डिस्क्राइब करने का, और ये बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होगा हमारे इस कोर्स में, इसलिए मैंने ये नोटेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। ए और ए प्लस एच के दरमियान अगर कोई नंबर मैंने बताना है तो मैं बताता हूँ इस तरह से, ए प्लस टी एच वेयर टी इज बिटवीन 0 and 1। गेट द मैसेज? यस।
ओके, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम इज अबाउट टू फंक्शंस. मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा. लोपिताल रूल जो है उसका जिक्र मैं सरसरी कर रहा हूँ. आप लोग पढ़ चुके हैं. लोपिताल रूल का प्रूफ भी शायद आपने देखा होगा, जिसमें मीन वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल की जाती है. Quickly, I'll just introduce Taylor expansion, where I finished today's discussion. मैंने कहा था कि मीन वैल्यू थ्योरम, the Lagrange mean value theorem, the mean value theorem, is the first order mean value theorem. नोट करो. क्यों कह रहा हूँ इसको फर्स्ट ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस्तेमाल होगा इसमें. और अगर मैं ये कहूँ कि जी ऐसी मीन वैल्यू थ्योरम हायर ऑर्डर की भी हो सकती हैं, इसका मतलब उसमें हायर ऑर्डर इस्तेमाल हो सकता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इस्तेमाल हो सकता है. सो टेलर सीरीज या टेलर एक्सपेंशन जो है, अगर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल अप टू ऑर्डर n एट सम पॉइंट x इज इक्वल टू a, यानी फंक्शन वैल्यू भी डिफाइंड है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी डिफाइंड है, सेकंड भी डिफाइंड है, अप टू nth ऑर्डर डिफाइंड है x इज इक्वल टू a पे, तो वी कैन प्रूव दैट द नेबरहुड. आपने ये नोटेशन पढ़ी है, कैपिटल N ब्रैकेट a comma h. हैव यू सीन दिस नोटेशन बिफोर? नो सर. नो सर. अगर नहीं तो मैं आपको दिखा रहा हूं. ये एक सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसकी नोटेशन है n. The letter n is for neighborhood. A is the center of the neighborhood, and h is the extent of the neighborhood. So this is the set of all x such that a minus h is less than x is less than a plus h. That means it is nothing new. It is nothing new. हम a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा करते चले आ रहे हैं ना. हम एफ एक्स माइनस एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन करते चले आ रहे हैं ना. वहां पे मिडिल में था a, यहाँ भी मिडिल में a है. तो हम कहते हैं कि नेबरहुड है ये. मेरे पास फ्री राइटिंग वो जो पैड होता है वो खराब हो गया हुआ है, वरना मैं फ्री राइटिंग से आपको दिखाता कि this is set of all points between a minus h to a plus h, and that includes a also. हम इसको पढ़ते हैं neighborhood of a with radius h. इसका मतलब है कि ओपन इंटरवल फ्रॉम a minus h to a plus h. इसका मतलब है मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, a minus h comma a plus h. Now let me bring this whole structure down. For every x belonging to this interval, which can be written as this, which can also be written in another form, जो कि हम करते रहे हैं. x minus a is less than h. ये वही चीजें हैं, और मैं कुछ नाम बदल बदल के, कुछ नोटेशन बदल बदल के, क्योंकि हम मैथमेटिशियंस जो है वो बहुत लेजी होते हैं. मैं इतना लंबा क्यों लिखूं, मैं इतना लंबा क्यों लिखूं, मैं इतना लंबा क्यों लिखूं. ये और ये सब एक ही मतलब है, और इसको मैं पढ़ता हूं ऐसे, नेबरहुड ऑफ ए विद रेडियस h. इसका मतलब है बीच में a है, h स्टेप लेफ्ट, h स्टेप्स राइट. जितने रियल नंबर्स हैं मैं इनको नेबरहुड ऑफ ए कह रहा हूँ. when I start formal discussion of real analysis,
नेबरहुड को हम इससे और ज़्यादा एक्सटेंडेड आइडिया के तौर पे डिफाइन करेंगे। टेलर थ्योरम ये कह रही है, ये टेलर एक्सपेंशन ये कह रही है कि अगर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल अप टू ऑर्डर n, we can write down the value of the function in this neighborhood, any point x in this neighborhood, as fa plus x minus a into first derivative at a plus x minus a square upon 2 factorial f second derivative at a plus x minus a cube divided by 3 factorial into third derivative at a, and so on up till x minus a raised to power n divided by n factorial nth derivative at a. This is an just an introductory remark for Taylor expansion. अगर इसमें हम a की जगह 0 रख दें तो यही Taylor expansion जो है Maclaurin's expansion कहलाता है. And I will proceed further in the review. इसके पीछे जाएंगे. हमने ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के लिए कुछ एक्सपेंशन लिखे थे, वो सारे के सारे हमने कहा था Maclaurin's expansion है, तो एक आध हम करके दिखाएंगे. And then from here I will move towards this part जो अब तक हमने डिस्कस किया है. This is all differential calculus, and this is the part of the real analysis which revolves around function and derivative. The second part of real analysis revolves around antiderivative and Riemann integrability, and if time allows, it goes beyond that. So ये जो कुछ हमने अब तक डिस्कस किया है, समझ लीजिए कि ये रियल एनालिसिस का वो पार्ट जो डिफरेंशियल कैलकुलस से मुताल्लिक है, ये उसका रिव्यू था. अब नेक्स्ट रिव्यू ऑफ कैलकुलस के अंदर मैं आपसे एंटी डेरिवेटिव और रीमन सम और रीमन इंटीग्रेबिलिटी का रिवीजन करूंगा. विद दैट आई terminate today's discussion. Questions are welcome on WhatsApp as well as on Facebook group. So अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा. Let me stop recording and finish today's discussion. Allah Hafiz.